So, Simriti, why you chose law as a career? Sir, I chose law as a career because I have a deep interest in society and the wrongs that are present in it. And by choosing law as a career, I want to go deep into the profession of an advocate and try to eliminate those. What are the challenges faced by the Indian judicial system and how to improve it? The challenges, the main challenge that is being faced by the judicial system right now is the great burden of the cases and the, the, the suspension of various cases due to the lack of time. By being a part of the judicial services, I will try to introduce such a precedent that causes the judges who are right now serving to have a longer serving time, that is reduce the retirement age, and to deduct the 3 year that civil judge criteria that is there, and that will increase the number of judges at Are this you present. aware about any judicial reforms which have been introduced and what they propose? Yes, I do. The recent reform that has been introduced to increase the practice criteria for being a civil judge, that is 3 years wait after completing the LLB degree and getting a license from the Bar Council. Wait and practice. Okay. And anything, what you feel, if you are the law minister, what top three reforms you would like to bring? The top three reforms that I would like to bring is one, for the inclusion of women as judges in India. As we can see in the Supreme Court, there is only one sitting judge present. And the second one would be a try to introduce rehabilitation as something that would, as an objective of criminal justice instead of using punishment, and that is being followed in many places. And other one is of course increasing the number of judges in the country. So, any other suggestions to improve the quality of justice? Any other suggestions that would be there is that in our system there are many reforms that have actually been included, such as the family courts, but they have not been implemented properly, or the ADR system. So I would like them also to have better implementation. Have you gone through the BNS, Bharatiya Nyaya Sanhita? Yes. What are they? How Yes. they are? What is your opinion on them? According to me, the BNS is not much different from what was CRPC, since only the sections and a few terms have been revised. But there are some. What did the changes. government say when it brought BNS? What It it wants to achieve? Okay, it wanted to achieve a better, of course, a better criminal justice system for the country. And the main thing that the government has done is to simplify the definitions in the BNS, which were difficult in the CRPC, and of course, introduce a modern law system for the country, since BNS is like 200 years old. There was a time frame committed by the Home Minister that from a lower court till the Supreme Court, in future the cases, criminal cases will take particular time frame. That was the goal with which this bill was introduced, and the Home Minister boasted about it. Are you aware about that or no? No. I think it was around 3 years. Okay. He said that we want to bring BNS, and those states, those areas where it will be implemented, and things will be moving through it. The decisions from the lower court to the Supreme Court should take maximum 3 years. That's the intention. Okay. With which it was brought in. Okay, sir. Are you aware about the justice in whose house, the case of the justice in whose house a big statue of cash was found? Yes, Mr. Verma, sir. Mr. Mr. Verma. Verma. So what is the status right now of his case? Right now, the in-house inquiry has been going on, whereas there have been some objections by Mr. Verma, Yashwant Verma, to be specific, and his in-house inquiry, his case was being fought by one of the most prestigious. What was the latest judgment of Supreme Court about that? The latest judgment was that the in-house inquiry, according to him, which was not legitimate, is legitimate now. According to him, the Supreme Court has said. The Supreme Court Yeah, has they have cancelled his cancelled request the appeal. for stopping, and they have said go ahead with the inquiry. Go ahead. Yes. Who is the Law Minister of India? The law minister, Mr. Arjun Ram Meghwal. Who was the previous one? Are you aware? No, sir.
how many laws you think government has made null and void in last 5 6 years? Are you aware? No, sir. Government gave a statement about it in the parliament. Just check the number. Okay. Laws made redundant. No. Null and void. आप पूछो जी. Are you have read any about major bills or judgments in past month or Past month or 2 months. Can I talk about the stray dogs case? To be Sure. sure. Okay, so there was a judgment passed by the Supreme Court of India that the stray dogs in the national capital of Delhi would be taken away to a certain center for the dogs, and there will be no more street dog biting. It was based on a survey, a practical survey, but it was taken away by the government, by the Supreme Court, due to the extensive public dissatisfaction. okay? If we have not opted LLB, then what you have chosen another path? Sorry. Not clear? If not law, then what? If not law, then what? Okay. If not law, then I will probably go into teaching of the subjects that I've already read, that include political science, to be specific. Okay. So you have more interest in politics. Not more interested. If not law, then political science. So what is the preamble of our constitution? Preamble. What is the preamble? Preamble. We, the people of India, solemnly declare ourselves to this constitution hereby, in this sovereign socialist secular democratic republic. This, What is your take on the SIR being conducted by Election Commission? according to me, this SIR, according to the political point of view, is not considered legitimate. But according to me, it is a good step in in revising the roles of a country, which have been actually What did not. Supreme Court do when people approached High Court? Sorry, Supreme Court. The political parties approached Supreme Court that this should be stopped in Bihar. Okay, the Supreme Court said that even the Aadhaar could be used as a legitimate source to vote. That is one thing. And secondly, it said yes, activity is important. It And is election. important. Third, it said election commission is independent. We can't dictate election commission. We can't pass orders for election commission. Like us, they are also a statutory body. Statutory, independent. और कोई क्वेश्चन होगा? Okay, fine. Good है. Confidence level अच्छा है. बाकी ये ना कुछ क्वेश्चन मैंने नहीं पूछे, which we have already discussed in the last class. Why don't you go for 3 years graduation and then later on आपने choose किया है BA LLB. Why don't you go for 3 years graduation and then 3 years LLB? Okay. तो सीधा आंसर पहले बच्चों ने दिया था, no 1 year will be saved. That is secondary. So आप कहो when I will be studying, what I have seen, you need to go through the curriculum of Symbiosis Law School and then quote them. That sir, I have seen in your when I am studying political science in the BA, which I will be studying outside also. Here, when I will study political science, more Guidance and mentorship better than. no, more framework of laws which are applicable related to political science. Sorry, political structures, Rajya Sabha seats, how they are, contested, how they are nominated, and then how they can be revoked, etc., etc. What are the legal courses available to the people of MPs of Rajya Sabha? Legal powers available to the MPs of Rajya Sabha, legal powers and remedies or protections available to the MPs of Lok Sabha. Like nobody can prosecute them without seeking the permission of the at least Speaker of the House. Okay. So these kind of privileges they have. What are the political privileges they have? Okay. So I'll be studying more during my graduations, because of which the things which I was otherwise going to study in the LLB 3 years thing get saved. So that's how this program becomes squeezed for 5 years. ठीक है. अब इसमें इंटर्नशिप होती है, कितनी इंटर्नशिप है सिम्बोसिस में पता है कुछ? बीच में इंटर्नशिप का पता लगा के रखो और उसको बोल देना. समर एक्सचेंज प्रोग्राम वो तो फॉरेन के साथ है ना. हाँ जी. वो एक है, बट इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी बच्चों की सुनना ना. मैंने ये भी कितना मैंने मेहनत करके लिखा था ग्रुप में कि जो पुराने बच्चे पास आउट हैं सिम्बोसिस लॉ स्कूल के, उनकी वीडियोस हैं IMS के यूट्यूब पे.
प्लस उनके अलग से बच्चों को शौक होता है कि मैं कैंपस कंपनी का डालूं, जैसे आईएम का कोई डालता है, अहमदाबाद कोई किधर, तो वो डालते हैं कि भाई हमारे यहाँ पे दिस इज द लाइफ एट सिम्बोसिस लॉ स्कूल। फिर उसमें मूड कंपटीशन आता है, वाई एसएलएस में मूड कंपटीशन आएगा, सिटिंग जजेस ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, दे विजिट, दे गिव लेक्चर्स। सो लिस्ट मिनिस्टर से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आप उधर भी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर पे चले गए जब मैंने पूछा जजेस और, because legal fraternity is more important for you. So when the sitting judges, the sitting, the fighting, the active Supreme Court or High Court lawyers who have 20 plus years of practice, when they talk, we learn from their experience what we would have otherwise learned in 10 years. 10 years. So that is what is unique in this program. So होना चाहिए, कोई चांस नहीं है, ये नहीं होगा, इसलिए नहीं है भगवान करे हुए। ठीक है, अच्छा है, कॉन्फिडेंस अच्छा है, यू आर गुड, लेट्स होप इट हैपेंस। ठीक है, ये भी जिसका नहीं हुआ, अरे हाँ बच्चे इधर शिफ्ट हो जाए। मैंने आपको एक अलग तरह से स्टार्ट दिया टू गिव यू एन एक्सपीरियंस। आई डिड नॉट टेल 80% प्रोबेबिलिटीज, टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ। उसको बैठने दो, लेट आई है ना, वो भी रिकॉर्डिंग देखिए, उसकी जो इंटरव्यू करनी होगी तब करनी। तो द गुड पार्ट, मतलब 80% प्रोबेबिलिटीज इट मे स्टार्ट फ्रॉम इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ, फिर आगे चलता है फ्लो, बट 20% चांसेस आर कि कहीं से भी स्टार्ट करेगा, व्हाई यू आर चूजिंग लॉ, दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड लाइक दैट। एक तो बैठने का स्ट्रक्चर ही है, ऐसे नहीं मुकेश अंबानी की तरह नहीं बैठना, सिर्फ इतनी लोअर बैक टू टच। हाँ, अभी कितना एनर्जी का फर्क पड़ गया, बॉडी लैंग्वेज, थोड़ा सा पोस्चर चेंज हो रहा है। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। So I am Marin Masood. I hail from city of Ludhiana, the industrial city. I am from DAV Public School, BRS Nagar, Ludhiana, and I am currently in class 12th, and I am pursuing humanities stream. I love playing taekwondo, and I think SLS Pune, with its dynamic crowd, top class faculty, and other support will help me achieve my goals. What is unique in SLS Pune? Sir, the most important thing is that they choose very dynamic people, How like do you which say is that? because we have a personal interview process, unlike other law schools. But and they check they check all of your aspects, co-curricular academic achievements. So I think more dynamic crowd is there as compared to other colleges. Okay, dynamic crowd. What else? And This is again global gyan, general gyan. Carry on. And their internship experiences, like they provide you 3 to 4 months of internship in a year. So so I would get practical experience from it. Why you want to go for the field of law? So because I think law shapes the society and is shaped by it. If there is no law, there is no society. If you call a group of people society, then you must regulate them. So law does that. Today's legal system of India, if you have to rate from a scale of 1 to 10, how much you will rate it? 6. Why? Because of overburden on judges, long drawn judicial processes, and citizen harassment. Overburden of judges. And solutions भी बताओ. Sir, sorry, sir, I would like to take some time. Sir, can you please repeat your question? Why? Okay, you said you have given 6 marks to the Indian judicial system. You said overburden of the judges are there, harassment of the plaintiff is there, etc. So how to improve it? Sir, settlement system should be improved. Judicial settlement like local adults should be empowered more, and like the number of judges should be improved, and accountability on judges must be improved, like we have seen in Yashwant Verma case.
which is on basically on corruption. So I think the judicial process must be more accountable and transparent. Top lawyers you like. Kapil Sibal. Um, what are the few latest cases he has fought? Uh, I think Yashwant Verma case he's fighting, Mhm. and I don't remember. He also represented Bengal government in the recent. SIL. No. Bengal government in the ED. Bengal Okay. government Okay. versus ED, enforcement director. What was the verdict of the Supreme Court interim decision by Supreme Court? Not followed. It is such a important issue for the whole country. Limelight, news, everywhere it was covered. You really have interest in law? It Yes. doesn't seems to be, because if you have a law interest and you have a favorite lawyer, you said Kapil Sibal, the case he has fought, you should have listened to what the Supreme Court had to say, because it was a first time a chief minister, sitting chief minister, went to EDA raiding premises and took away files, laptop, etc. from the that place outside. And then, are you aware that FIR was fired? FIRs were launched in Bengal against the ED officers who were doing their duty, who were doing their job. So if you need to be aware of these are very macro level conflicts between central agencies and a chief minister. And it is whatever comes out from Supreme Court will set precedents in days to come. Any one of you are you aware about this? No. कर लो फॉलो tribuneindia.com टाइम्स ऑफ इंडिया कोई छोटा पेपर ने भी इसको नहीं छोड़ा न्यूज में भी यही आ रहा था ममता बनर्जी फाइल लेके आ गई 1.5 घंटा बात कर रही है आ रहा था ना फिर आपके तो लिंक्ड है तो पहले एफआईआर लॉन्च की उसने ईडी के ऊपर फिर गई सुप्रीम कोर्ट की ये नॉट अलाउड होना चाहिए पॉलिटिकल है मेरा पॉलिटिकल वो पार्टी मुझे वो कंपनी मुझे पॉलिटिकल कंसल्टेंसी देती है इसलिए बीजेपी ने रेड करवाया है इलेक्शन आने वाला है फलाना दिन इट शुड बी स्क्रैप फलाना दिन का एक्शन शुड बी टेकन सुप्रीम कोर्ट आप दोनों से मेरे लास्ट टाइम वी हैड डिस्कस इट अब वीडियो सुनी होती तो हमें खीर जी तैयार की हुई खा लेनी थी समझ में अपना ही कॉन्फिडेंस आप होता है ना चीजें 100 चीजें उसमें बताई गई Supreme Court said the FIRs are stayed on the ED officers. Secondly, Supreme Court made it clear that Enforcement Directorate has full liberty to go and do the work even in other states. Thirdly, Supreme Court gave a general observation, which was also important, that agencies should not be used as against political opponents by acting in a time when political elections etc. are coming. So that was another observation which was for the government and the central government, but the two were in the against the Bengal government and two were against your lawyer, favorite lawyer. और कौन सा केस इसने किया थोड़ा फेल कर उसमें भी यही था बंदा ये उसके उसको छुड़ाने के लिए गया होगा सुप्रीम कोर्ट उसमें क्या वर्डिक्ट था सुप्रीम कोर्ट ओवरटर्न्ड द हाई कोर्ट तो फिर फेवरेट लॉयर क्यों है वो तो उल्टे पुल्टे केस लेता है गलत लोगों के लिए लड़ता है और हारता है तो फेवरेट कहाँ से हो गया बताओ जरा Sir, I think right to defense is a agreed right to defense is good but he's taking cases which are where he's failing in most of them in the recent 1.5 or 2 years. So you try to know what I'm trying to tell you is that you need to know one or two good cases he has fought and won for his clients. Sir, I think winning is not everything. Winning is not everything. If the Supreme Court's interpretation of law is okay, Yes, and he's losing, that means he was trying to present a wrong case. Number one, or he was trying to not being able to convince Supreme Court. Both the things he gets, not a good label as a lawyer. तो मैं ये कह रहा हूँ एक दो उसके अच्छे केसेस पता हूँ तो आप ये बोल देना ये these two areas were there where he fought good मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा अभी SIR में भी शायद यही था SIR के अगेंस्ट भी he had gone to the courts
एक दो इसके अच्छे केसेस थे, आई रिमेम्बर नॉट नाउ इमीडिएटली एबल टू रिकलेक्ट, बिकॉज रिसेंट टाइम में उल्टे पुल्टे केस ले रहा है जो काफी अगेंस्ट लॉ, लॉ ब्रेकिंग लोगों के हैं एक्सेट्रा. Where do you see yourself 10 years down the line? Sir, I see myself as a judge or bureaucrat serving the country. Why bureaucrat? Sir, because I think my decision will directly impact the society, and I wish to improve the lives of our. If you don't become any of these two, then what? Then, sir, I would probably be a lawyer. Which field of law interests you? Sir, contract. Basically, civil cases, Yes, sir. civil oblique business laws. Law के question. You have interest in civil cases, basically contract. So, what is the difference between an agreement and a contract? Sir, agreement is not legally enforceable. When the legally enforceable agreement is contract. Any other differences you might I don't think so. Okay, so you have written about leadership qualities in your series. What do you think about yourself as a leader? So because of my experience as Secretary General of my of DAV Youth Parliament 2025, plus I think uh, I have patience and I am really hardworking, which a person who can coordinate between people. What were the challenges you faced in yours? The challenges I would like to take them sometimes. Sure. Challenges were basically the people. My team members were not willing to cooperate. I had to settle disputes between them and like extract productivity from them. What is anti-defection law? Are you aware? Yes, sir. What does it state? Anti-defection law means that the sitting MP or MLA cannot vote against they cannot change their parties basically. Until unless a particular number Yes, sir. together move. 2/3, I guess, Hmm. 2/3 of sitting MPs or MLAs of parties do that. Have you seen or gone through any? Have you visited any courts so far? Yes, sir. Which one? District Court Ludhiana. And you sat in some case? Yes, sir, because my father is an advocate, criminal advocate. So along with him, I have You visited. should have some in your introduction. This is missed. Very important. Very important. So you visited and you witnessed some cases. Yes, sir. But I was like not able to grasp what is going on because I am not mature or I don't have How that many knowledge. How many cases? How many hours you sat in the court that time? Nearly 1 hour. 1 hour. Bus. That's Yes. all. Yes. You should have sat for the whole proceedings if you had interest, good interest, 11 to 2 p.m. Why you came back? Just you observed your father's case and then you came back. Sir, I don't think I have knowledge or. Well, that's you will gain when you sit, when you listen. Have you seen any recordings or any live proceedings of any Supreme Court or High Court case? देख लेना अभी जाके एक हफ्ते कहीं आजकल यूट्यूब पे धगाधक पड़ी Boy, हुई है. sir, I have seen one in which the judge was scolding an IAS officer. हाँ कोई अकेला ही नहीं है और बड़े कुछ हैं अच्छे केसेस भी होते हैं. प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट व्हाट इट इज नहीं पता क्योंकि ये सब चीजें रोज डिस्कस हो रही है टीवी पे. किसी को पता है जो रोज डिबेट हो रहा है जिन चीजों पे रोज किसी न किसी जगह पे इसको उछाला जाता है. अकबरुद्दीन अवैसी जो है वो इसी को बार बार हार्प करता है.
प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट मैक्रो लेवल पे मुझे लगता है कि ये कहता है 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो जिस जगह पे जो रिलीजियस प्रैक्टिस चल रही थी पीपल वर पेइंग सम प्रेयर दैट स्टेटस क्यू शुड बी मेंटेन उसे पंगा मत लो और इसमें एक डेविएशन राम जन्मभूमि की गई एज ए स्पेशल केस बिकॉज इट वाज कंसिडर्ड एज ए प्रॉपर्टी डिस्प्यूट दैट इज दैट वाज टेकन एज ए आउट ऑफ द कोर्ट ने ये भी बताया कि हमने क्यों इसको अलग से किया राम जन्मभूमि इज ए क्लासिक एग्जांपल एंड हाउ द कोर्ट गेव a decision in that case against or keeping this aside you need to know ram janambhumi dispute how court said that places of worship act applies to previous things 1947 ऑनवर्ड जो चल रही थी बट इस केस में डिफरेंट है दो तीन उन्होंने साइटिंग रीजंस दिए थे शायद वन ऑफ देम कुड बी के ऑलरेडी डिस्प्यूटेड था इवन 47 से पहले कुड बी सेकेंडली कुछ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट केस के उसमें लिया गया था ऐसे कुछ था नहीं दे गेव ए हाँ मिल रहा बोला सर how the chief justice of India is elected Sir, basically, doctrine of seniority is followed in the case of Chief Justice, where the senior most judge of the High Court is appointed as Chief Justice. any latest news you have followed in last two days very important news नहीं पढ़ रहा टाइम टू इंडिया Republic Day, sir. क्या Republic Day's theme and सारा दिन EU. that's not a news that is routine सर इसके अंदर इंटरनेशनल केसेस भी हम बोल सकते बोल हैं सकते हैं मैंने उस दिन जो मॉक इंटरव्यू की थी मैंने पूछा भी था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हाउ इट वर्क्स नहीं जो आपने 2 days recent न्यूज़ बोली हाँ एनी नेशनल ग्लोबल एनी इम्पोर्टेंट बिजनेस थर्डली आ जाता है फिर वो कह सकती है स्पेसिफिक टू लॉ फील्ड वो भी बोल सकती है तो पहला तो अभी आज ही की न्यूज़ है यूरोपियन यूनियन एंड इंडिया हैव साइंड ए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट for 96% items, approximately 96.7 or something percent items of UK and India will be traded on without any tariff. Mother of all deals. Mother of deals. 1/4 of global GDP इसका potential है. But at the same time, क्यों 4% बाकियों को क्या हुआ 3.3% का? वो सर एग्रीकल्चर सेक्टर को So they are called restricted items. Under the clause of restricted items, there are some items which India doesn't want to come without duty, and some items European Union would not agree to send those items on free trade. I think zero trade. India is really protective about its agriculture sector. Has to be because not only agriculture, there are sectors like pharmaceuticals, there are sectors like steel, there are more sectors, sensitive sectors, small scale industries, lock manufacturers, etc. Where if government knows if things start coming from abroad free of without any tariff, Indian market hill jayega. It could be some of the automobiles also, automobile sector also, electric vehicles also. If they start coming without duty, बाहर से बन के, तो फिर तो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं होगी. Kind of cases which come under business this contracts. Have you studied any? पढ़ लेना एक दो. Disputes normally होते हैं on the price, on the late deliveries, quantities. Then there could be some of the terms of the employee and employer agreement. उसमें कुछ deviations होती हैं. इतने महीने बाद में आपको कूलिंग पीरियड था फिर कहीं ज्वाइन कर सकते हो उसने डिविएट कर दिया copyrights material ले गया Vicarious liability. many various things how what do the law advising companies they do like Qatar Asus any top law advising companies names law में जाना है
paralegal, I think. Okay, that is very not very great one, big one. Is it the Hmm. KBZ, KBZ Associates, Khaitan Associates, ये सबसे टॉप वाली है इंडिया में. Khaitan, who have big offices in India, various cities, Delhi, Mumbai, etc., and then they have tie-up offices in abroad also. So if we wanted to take a plant in Philippines, we contacted Khaitan Associates in India. They had their legal partners in Philippines. They guided us how to what is SPV, Special Purpose Vehicle. अब आपने कॉन्ट्रैक्ट का बोला, कुछ कॉन्ट्रैक्ट की टॉप टॉप टर्म्स आपको पता नहीं चाहिए. स्पेशल पर्पस व्हीकल के अंडर जो कंपनीज रजिस्टर की जाती हैं, जैसे फिलीपींस में हमने रजिस्टर की थी टू टेक ओवर एक company which from government of Philippines in Philippines, which was around 1200 crore, sorry 1200, 1200 crore item procurement from government. So we entered, we got our company registered under SPV, Special Purpose Vehicle. There is a separate like types of companies पूछ सकता है आपसे, क्योंकि आपने जैसे ही बिजनेस लॉ लेवल में थोड़ा what type of company, proprietorship, sole proprietor, limited, one person, वन पर्सन हो गई, पार्टनरशिप, लीगल एंड उनका लीगल इम्प्लीकेशंस, फिर लिमिटेड कंपनीज, फिर शेयर होल्डर्स की क्या उनकी रिक्वायरमेंट, मैक्रो लेवल बड़ी रिक्वायरमेंट, एनुअल रिपोर्ट निकालनी, इनकम स्टेटमेंट, सब कुछ सेबी के उस पर अपलोड करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो 5 जो मोटा मोटा पॉइंट है. तो एसवीपी में रजिस्टर किया. फिर एसवीपी इज ए entity in which you can procure a local entity very easily. You can transfer funds from big uh, banks to this organization, and from there you can pay to the government without any tax involvement, without any hassles, and without getting into a longer way. इस वे में हमने ऑलमोस्ट 1 मंथ में अपनी एक्विजिशन कंप्लीट कर ली. और जो दूसरा तरीका होता है, हम जाके अपनी नॉर्मल आइडेंटिटी बनाते, फिर उसमें अप्रूवल्स लेते, फिर अप्रूवल लेते लोन लेने का, फिर उसमें पैसा आता. इट वुड हैव टेकन 6 to 8 months. So people who know the local laws, they will advise you how you should do this merger or this acquisition. So that is where these companies they come in. Plus, whenever a big company wants to buy, merge a company in another company or acquire another company, so they would like some top advising company to evaluate what are the legal risks I will be taking when I take this company. वो भी इनका बहुत बड़ा एक रोल होता है. They study all the legal cases of the company. They tell their assessment, chances of winning 70%, 20%, 30%, 80%. रिकॉर्ड हो रहा है बच्चा जी, आप इसी के बारे में कुछ लिख रहे हो, वो रिकॉर्ड हो रहा है, आपको मिल जाएगा. हो रहा है ना रिकॉर्ड, देख लो, चल रहा है ना पीछे, ये पता चले कुछ. सो फोकस हियर नाउ. थिंक आई एम आस्किंग हिम ए क्वेश्चन, आपको पूछा गया तो आप क्या आंसर करोगे, तो आपको ज्यादा टीज करेगा. अभी नहीं समझ आएगा, अभी तो पूछ रहा हूँ उनको कि ग्रिलिंग हो रही है, आप तो आराम से बैठे. थिंक दैट क्वेश्चन विच इज आस्क्ड फ्रॉम हिम, इफ इट इज आस्क्ड फ्रॉम यू, व्हाट विल यू डू. प्रिपेयर्ड हो, उससे और ज्यादा अच्छे से बंदा मेहनत करेगा, तैयारी करेगा. तो इन मर्जर एंड एक्विजिशन द रिस्क असेसमेंट, लीगल रिस्क असेसमेंट इज डन थ्रू दिस लीगल कंपनी. आपने बोला यू वांट टू बी आईएएस जज और एटसेट्रा. Which other profession, second option you had instead of law in your mind? Law is. I think If not law, I would follow my sports career. If not law. I would have followed. Your father has practiced for how many years? Nearly 25 years. How, 24 years. how many of his cases you have gone through the file? I have gone through two major cases. Full file you have seen? Not full file, but देख लेना. Be ready. When you say here, because in introduction you will have to say civil cases, criminal cases. Criminal lawyer practicing for last 25 years. तो जैसे वो बोलेंगे तो आपका लॉ में इंटरेस्ट है, तो they will assume if the interest is genuine and real, you would have gone through files of at least 8 to 10 cases by now. इतना कर नहीं सकते तो कह देना 1 or 2 top cases I have analyzed. Analyze means पूरी मोटी फाइल पूरी देखो, केस का क्या था, how it was fought,
what loopholes were diagnosed. बात ही कर लेना पापा से, मोटा मोटी 2-3 केसेस का बता देंगे। तो कहाँ से भी लूप होल मिले, सीसीटीवी था बट उसमें क्लियर फेस नहीं दिख रहा था, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो हाउ ही डिफेंडेड हिज क्लाइंट, हाउ ही गॉट हिम आउट, एटसेट्रा, तो सारा पता होना चाहिए। तो बेसिक premise of Indian judicial system, Like I didn't understand. the basic premise on which the Indian judicial system works. Sir, I think it works on punishment and rehabilitation. वो छोटा सा सब part है, सबसे मैक्रो लेवल, where sometimes it is criticized also. Presumption of Presumption innocence. of innocence. Not guilty, Golden thread principle. not guilty Until 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 proven. proven innocent. Golden So thread this is the macro level, you know, premise on which the law, Indian judicial system works. But in like rape Alleged, cases and also Rare accused, cases, उसके सब कुछ अंदर. accused, alleged है, Okay. but until unless proven No, guilty. not guilty. तो प्रूवन करने के लिए स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस नीडेड। उस दिन हमने उसमें डिस्कशन इतनी की हुई है, Golden. उसमें गैप्स हैं हमारे किसी भी जुडिशियल सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए। यू नीड बैकबोन ऑफ जुडिशियल सिस्टम इज व्हाट? एविडेंस, collection, protection, presentation of the evidence, right, correct evidence. And then who will do it? Investigating officer. Does he have any reward if he does a good job? No. No. Does he have any punishment if he does a bad job? No. So his chances of getting compromised are very strong. एक नुपुर तलवार केस था, इसका आरुषि तलवार, उसके पापा मम्मी का। तो दे हैड जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस थी, दैट वाज शोइंग अबाउट 90% कॉन्फिडेंस के साथ कि दे वर द ओनली पीपल हु कुड हैव, द फादर कुड हैव किल्ड द किड। सर्जिकल कट था, सर्जिकल उसके साथ, सर्जिकल उसका he was a knife doctor, था, right? was a surgical doctor. Many things pointed towards that, but the point is the crime scene was not protected at all. Next day, the day of the crime, reporters were entering inside with camera. Many, new footmarks were coming in, new touch, fingerprints were coming in, DNA was getting compromised, and the police was so वही क्यों, अब बैकबोन कहाँ से होनी थी? पहली चीज है, क्राइम हुआ, रिपोर्ट हुआ, सील द क्राइम प्लेस, आप बाहर चलो जी। अगर किसी ने जाना है, कोई चीज लेनी है अंदर से, हमें बताइए, वी विल गिव यू, पुलिस विल record it and then give it to them. If something, keys, etc., very important things are required, and for that also they will wear gloves, Forensic services. forensic protection gloves, so that if they open the doors, the earlier marks or the fingers don't get compromised. घर का नहीं किया, बिल्डिंग का करना चाहिए था, वो नहीं किया। 4th या 5th डे पे बिल्डिंग के ऊपर एक लाश पड़ी थी, हेम शर्मा की, हेमराज की, उनके डोमेस्टिक हेल्प की, वो नहीं देखी थी। 4th 5th डे वो मिली, उसके स्ट्रेन थे ब्लड के, somebody had washed them, not thought it through. उसके स्टेयर केस पे किसके थे फिंगरप्रिंट, कौन खींच के लेके गया, क्या फुटमार्क थे, क्या नहीं, कुछ है। तो जब एविडेंस ऐसे कॉम्प्रोमाइज होगी, सेकंड डे आई थिंक दे क्रिमेटेड द बॉडी, again a bad mistake. So very quickly the crime scene was not protected, so evidence कहाँ से मिली? किसी भी जुडिशियल सिस्टम के लिए एविडेंस बैकअप, बैकबोन है टू गेट इट। आपका कॉन्ट्रैक्ट भी हो तो भी एविडेंस दिखानी पड़ेगी, वो बंदे ने ये ऐसे ब्रीच किया, आज वो ये कर रहा है, ये। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट, थोड़ा सा पढ़ लेना इसके बारे में, जाके वीडियो सुन लेना, ये भी पहले वाली। एविडेंस प्रोटेक्शन एक्ट आज के दिन में बहुत ढीला है। एविडेंस को ना कोई इंसेंटिव है कोर्ट में आके गवाही देने को, और उसको बार बार बुलाया जाता है। कोर्ट दूसरे जो होते हैं डिफेंस लॉयर्स फटाफट बोल देते हैं कि ये आज ये है, आज ये कारण है, डेट दे दो। वो बेचारी एविडेंस ट्रेन से या बस से जाती है पठानकोट से चंडीगढ़ एविडेंस देने के लिए, और फिर पता चलता है कि आज तो नई डेट लगी। फिर जजेस के केसेस बहुत ट्रांसफर होते हैं। For 2 months or 3 months, a judge looks into a case. After that, it is changed to another court. What is this?
तो ये तो कुछ ऐसे रिफॉर्म्स हैं जो प्रोसीजरल हैं. The judge should be consistent given as long as he is in that city, as long as he is High Court Chandigarh judge, and as long as there is no complaint or there is no evidence that he is doing something very malicious about that case, he need not be changed. Because by 3 months he would have gone through the notes 2 3 times, he would have made some understanding about the case, and then the case is shifted to another party. सलमान खान के टाइम पे भी काफी मैंने लिखा था एक क्वेश्चन, मैं पूछा नहीं, is Indian judicial system same for all? No. It's not same. Give us some examples. Salman Khan is a Sanjay classic. Dutt. ये भी उन्नाव रेप केस में भी Salman Khan later. उन्नाव रेप केस में भी यही काइंड ऑफ हो गया. उसमें the thing what looks to be the judge may be compromised, high court judge, but unfortunately punishment उसको भी नहीं होगी. बट वो आप इस न्यू बिल्कुल ही निचली स्टेज पे, न्यू एंट्रेंट स्टेज पे ऐसा ना बोलना. मेरे जैसा बंदा रेडिकल थॉट्स के साथ बोल सकता है. मुझे किसी दिन प्राइम मिनिस्टर या कोई अगर फेस होगा किसी से, तो आई विल आस्क सम क्वेश्चंस. आई कैन आस्क, मतलब बिकॉज आई एम नॉट एंटरिंग इनटू जुडिशियल सिस्टम. आई हैव ए लॉन्ग व्यू. So I, as a reformist, as a citizen of the country, I can ask these questions. आप अगर इस पे कहोगे तो पकड़ लेगा कि आप, it can be a judgmental error. Why you are making a strong judgment, opinion, strong judgment. You are also making a strong judgment on the judgment error of a judge. So this is the way it can go wrong. Yeah. So it is not, unfortunately, as on date, there are different layers where the law is applied differently to different citizens, which is not fair, which is not what the constitutional framers wanted. Even in jail itself, it's different. Jail में तो second stage आ गई. Second stage when the complainant goes to complain. They are not listening. If he is from a weaker background, if it is not influential, if it does not give him money to the police station guy, FIR is if he does not have a MP or MLA to back him or MC to back him, his cases are very seldomly, the cases are registered. पहला stage ही वहाँ पे discrimination आ. Expensive बहुत है. Secondly, he has to hire some lawyer. Thirdly, he has to fight with the big parties. Fourth, if the other party is given unfair bail, he will come out and harass them, threaten them, and try to agree for out of court settlement. If that doesn't happen, they keep on taking dates and dates and dates and dates on some pretext or the other. So the case is delayed. Become. अब बाकी जो डिलेड है और लंबे केस हैं, उसके लिए हमने बात उस दिन की हुई थी, उसका सजेशन क्या है उसको मैं रिपीट कर रहा हूँ. सुन लेना कृपा करके. ये 90% से बहुत प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस हैं जो आज भी डिस्कस हो रहे हैं, जो उस दिन भी डिस्कस हुए इनके इंटरव्यू में. उसको सुनना इज मोस्ट, मतलब नेक्टर है, उसको ना पकड़ के हम समुद्र में तैरते रहे, वो बात होगी. ठीक है, बाकी कॉन्फिडेंस ठीक है, गुड है, होना चाहिए. टच गुड. व्हाट इफ वी रिजेक्ट यू? क्वेश्चन वर्सेस लॉ स्कूल पुणे. Sir, I would like to pursue my career as law in another कॉलेज ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ कि मैंने तो फेल, मैं तो होना ही फेल है. नो, ये भी मेरी पुरानी 2 घंटे की जो मैंने वीडियो भेजी हुई है, जो कहा हुआ है सुन लो. उसमें कहा हुआ है, इफ दे आस्क यू डोंट एडमिट इट इमीडिएटली, दे वांट टू चेक योर कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ. बताता हूँ, उसमें दिया हुआ है 2 घंटे वाले, मैं फिर बताऊंगा. द पॉइंट इज दे आर ट्राइंग टू नो यू थ्रू यू, व्हाट यू नो अबाउट योरसेल्फ फॉर 18-19 years. कोई डिटेक्टिव थोड़ा लगाने हैं उन्होंने, तो उनको लगेगा वहां पे कॉन्फिडेंस 100% नहीं है, 70% है. ये तो मुंडा है, कुड़ी फटाफट मान गया कि मैं फेल हाँ, मैंने तो मैं कितने और कर लाऊं निकल. तो इधर कितने 100 पहुंचेगा. So your first reply should be, sir, I think I have done well in my test, and I think I bring the value systems what Symbiosis looks into, and I think I have given, sir, इस time थोड़ी smile करो, sir, I think I have given good interview, decent interview, so I am relatively confident, sir, I'll be selected. इतने पे वो स्माइल करके नॉर्मली कह देंगे, क्लोज कर देंगे इंटरव्यू, अगर वो जस्ट आपका कॉन्फिडेंस है. फिर ग्रिल करने के लिए कई बार बोल सकते हैं, नहीं स्टिल assume that we are rejected. And then, sir, first thing I'll try to introspect where I made a mistake, where I may have made the mistakes, and then I'll try to correct them so that they don't hurt me in my future career. This is a reformist positive approach. ठीक है. थर्ड स्टेज पे ज्यादा नहीं, मैंने नहीं लिखा है कोई ज्यादा. तीसरी स्टेज पे गया नहीं, अज्यूम कर ही लोगे फिर इतने पे ही होता है बस. ठीक है, चलो शाबाश. नेक्स्ट मानवी, उसको बुला लो अपनी फ्रेंड.
ये लो मित्र, एक इधर करो, नहीं और कर लो इधर। आप इधर आ जाओ आर्यमन, लॉ के अच्छे अच्छे क्वेश्चन ही पूछ रहे पूछने वाले। हाँ जी बच्चा जी, कितने बजे से की क्लास है? चलो बैठो, आज ही था। फिर कितने बजे? 4 बजे फ्री हुआ है? 4:30 बजे? नहीं ना, 2 बजे फ्री हो गए ना? चलो, आपका कौन से कॉलेज के लिए है? विल डू ए मॉक इंटरव्यू टुडे। पहले वाली वीडियो नहीं देखी होनी है, प्रैक्टिकल चल रहे हैं। अच्छा, सिर्फ एक दी देखी है, कार्तिक दी सारे ने। कार्तिक इज फेमस। टचवुड। चलो इनकी भी देखनी थी, बहुत अच्छी थी, डाली हुई है उस दिन। 2 थी इंटरव्यू जो डाली थी, एक में 2 बच्चों की थी, एक में उनकी। ओके मानवी, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। I'm Manvi Joshi. I'm from Ludhiana. I'm a 12th grade student, and I'm passionate to learn about law and justice. And getting into SLS Hyderabad is to aim more, develop my skills into legal education. Okay. What are the similarities between Hyderabad and Ludhiana? Well, I see no similarities because I believe Hyderabad is more developed than Ludhiana. थोड़ा सा नेगेटिव आंसर हो गया। आप, मैंने उसमें इंटरव्यू में बात की हुई है, यू नीड टू टेक ए मिडल लाइन काइंड ऑफ डिप्लोमेटिक। देखें, आपको फ्यूचर में लॉयर के लिए वो ले रहा है, लॉयर हैज टू हैव बैलेंस बिटवीन ऑपोजिशन लॉयर के साथ आर्गुमेंट भी करना है, जज की रिस्पेक्ट भी करनी है, उसकी रिस्पेक्ट भी करनी है, लड़ना भी है। तो इट इज 80% डिप्लोमेसी एंड डिप्लोमेटिक नेचर व्हाट दे नीड इन कोर्ट रूम्स। कोई ऐसा नहीं है इतना लड़ाई हो जाए जैसे जॉली एलएलबी में भी, कि भाई मैं तेरा सिर फोड़ दूंगा, मैं तेरे को देख लूंगा, मैं मेरठ का हूँ, मैं इधर। So similarity, sir, there are some similarities. There are some areas where both differ. Both are different. I think population-wise, both would be nearly similar. In terms of square kilometer areas, nearly similar. Ludhiana is more of industrial city and gives employment to a lot of people. Yes, Hyderabad is more of IT hub. IT cyber hub again gives employment to a lot of people, but in the IT sector. So these are the broaderly on a macro level the similarity and dissimilarities I have seen. Okay, sir. इस तरीके से बोलना है हमें तो। I'll work on it. अपना क्या है कि वही कह दिया साडा लुधियाना बेकार है, साडा लुधियाना बहुत बेकार है, वो पीछे आ रहे हैं। नहीं, I'll work on it. मेरे को पता नहीं था। बस कोई नहीं, the point, we don't know whether they will ask this question or not. What we need to understand is the approach. Whenever such open questions are asked, you need to take a position in such a way कि ना extreme इधर हो कि बिल्कुल बेकार है, ना बहुत बड़े पर दिया है, बीच का रास्ता। ठीक है। सुबह से why SLS Hyderabad? Because ग्लोबल ज्ञान है, अभी गहराई में पढ़ा नहीं है कॉलेज में ना, पढ़ लेना जो कॉलेज का मैंने बोला ना, एक प्रोफेसर को आई हैव सीन द सर द टीचर्स। Dr. Sunil George. Okay. He's a famous personality of Hyderabad. He comes there. आपस में नहीं बात करनी प्लीज। He comes there for the justice, like youth course and all. Okay, fine. So that he's a visiting faculty. Yes. Any else as a teacher also? You just look at his profile. Okay. I've seen sir. I think Symbiosis Law School, Hyderabad or Pune or whichever college. Hey, ma'am, इधर कहाँ चला गया? हाँ, तो आपका क्वेश्चन है, आपके क्वेश्चन में जाना है पुणे में। हाँ, तो पुणे का याद करना है किसी एक टीचर का। हाँ, तो पहली चीज फैकल्टी, ये लोग भी फैकल्टी हैं जो आपके इंटरव्यू ले रहे हैं, वही लेते हैं। तो वंस यू से सर Symbiosis Law, start your answer with this. Sir, I think the first and the foremost most important thing is that quality of teachers. I have seen the profiles of the some of the teachers like Mr. ये this advocate this कोई होगा, he has done BA LLB and then PhD and then he has a practice of almost 10 years. So those kind of teachers, once they teach us, we will learn things which will take us 5 years to learn in our practice. So that is one thing which differentiates the program. First up. Secondly, curriculum. Curriculum में कुछ subjects याद होने चाहिए। Curriculum.
So I've seen these two, three cyber law, Thoughts. टॉर्च तो पुराना जो चल रहा है, कोई नया आईटी एक्ट रिलेटेड सब्जेक्ट, साइबर लॉ रिलेटेड, एटसेट्रा एटसेट्रा. सो क्रिमिनल BNS. बीएनएस भी कह सकते हो, अगर कुछ जो आपको ठीक लगे, यूनिक लगे कुछ, कि मतलब डायनेमिक है. अब ये साइबर लॉ नई चीज है, आईटी लॉ नए हैं, इनसे रिलेटेड सब्जेक्ट्स उन्होंने डाले होंगे जो पंजाब यूनिवर्सिटी में आज से 10 साल बाद डले. तो वो यहाँ पे करिकुलम भी रिवाइज होता है रेगुलरली. वो बोल सकते, फर्स्ट इज क्वालिटी ऑफ टीचर, सेकेंडली करिकुलम, थर्डली पीयर ग्रुप. ये कोई नहीं बोल रहा. पीयर ग्रुप, आई विल हैव diversified peer group from all over India. Dynamic. डायनेमिक की बजाय Diversified. डाइवर्सिफाइड पीयर ग्रुप. डाइवर्सिफाइड पीयर ग्रुप इसमें आ जाएगा फ्रॉम वेरियस स्टेट्स एंड फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड. So I learn from them. Otherwise, if I had studied in my local Punjab University, this thing, the 80%, 90%, 90, yeah, the almost 100% crowd would have been from the same area from where I hail and with whom I have studied already. So my learning, Limited social interaction. my learning, which was going to come through a good peer group, was not going to take place. फिर लाइब्रेरी देख लो, मूड कंपटीशन. लाइब्रेरी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कोर्ट वालों के लिए. सारे वहाँ पे पढ़ी हैं, लिखा हुआ है इन्होंने, इतनी बुक्स है हमारे पास, इतनी कोर्ट ये हैं केसेस के, ये हैं समरीज हैं सुप्रीम कोर्ट के केसेस के. लाइब्रेरी एंड देन मूड कंपटीशन एटसेट्रा. दो तीन भी बोल दिए ना, बढ़िया. ट्राई टू स्टार्ट विद टीचर्स. व्हाई वन वी शुड बी सिलेक्टेड? So, well, I want, like, in my opinion, I believe that I want to develop skills, and I will participate more in competitions that will be held for law. एग्रीड है, आपने जो आंसर दिया, डेवलप स्किल्स. कौन ऐसा बच्चा होगा जो नहीं करने के लिए? आई विल पार्टिसिपेट. कौन ऐसा जो नहीं करेगा? सो व्हाट इज यूनिक इन यू? यू हैव नॉट पुट इट ऑन टेबल. Qualities हैं. आपकी यूनिकनेस, आपको जो लगता है, व्हाट मेक्स यू यूनिक, Hard working हो वो गया. भी बेसिक है. वो हर कोई ऐसा वो कह देगा ना कि वो तो हर कोई होता है जी हार्ड वर्किंग. तो आप अपना सोचो, क्रिटिकल थिंकर. Multiple pursuits follow करते हैं. क्रिटिकल थिंकर हो ना, थोड़े बहुत इस तरह की क्वालिटीज जो लॉ के लिए सूट है. क्रिटिकल थिंकर, एनालिसिस, स्ट्रेंथ, डिबेटिंग. कर लेते हो डिबेट? अगर हाँ, डिबेटिंग स्किल्स. I think all these are very much required in the profession of law, so I think I am suited for this. फिर values, ethics, है ना? फिर बोलो, ये उनको यही चाहिए, वो लिखते ही हर जगह यही है. We want to develop ethical lawyers, value driven lawyers. वहाँ का हाई कोर्ट कहाँ है? आंध्र प्रदेश का पता होना चाहिए. अपना तो है ही. तेलंगाना. सॉरी, हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना कहाँ है, कौन सी स्टेट में? हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट, macro level. Where do you see yourself 15 years down the line? Well, I see myself learning more and more, and I also see myself as a good lawyer and helping my society get good justice and develop. कोई अगर ऐसा कुछ हो जाए तो कहना सर, आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट. पानी पीने का मन करे, यू कैन इजीली आस्क, कैन आई टेक लिटिल बिट ऑफ वाटर? ले सकते हो, उसमें शर्माने की जरूरत नहीं. 15 years down the line, learning more and more is okay. इसको आपने इसलिए बोला कि तब तक आप सोच रहे थे कि क्या कहना है अगला आंसर. दैट्स गुड स्ट्रेटजी, नो प्रॉब्लम. Then second should was also okay. I'm trying to, I see myself either as a judge or as a senior lawyer, senior lawyer, lawyer, lawyer who whose reputation is established, whose
reputation is established as a lawyer who uh, who tries to take ethical and right ways to fight the cases. तो वो ऐसे ही जैसे आपने ये बोला उन्हें पूछना डू यू थिंक मेनी एडवोकेट डोंट फॉलो द एथिकल एंड वैल्यू ड्रिवन कोड सर आई एम नॉट सेइंग अदर्स मे नॉट बी डूइंग बट दिस इज माय Opinion. my opinion and my goal. सो एनी जैसे ही ऐसी तरफ चली गई डिस्कशन तो वो पूछ लेगी एज या पूछ लेगा एथिकल लॉयर एज फॉर यू हु इज एथिकल लॉयर थोड़ा देख लेना एथिकल Should I tell you this answer? है पता है Yeah. बताओ Indira Jaising. Very good. She was. एक्सीलेंट शाबाश गुड वेरी गुड शाबाश शुक्र है स्पार्क ये स्पार्क आया कहीं आपका स्पार्क आ गया और नाम ऐसा बोल दिया आपका काम हो गया सिलेक्शन हो गया आप 50 में आ गए 500 450 550 500 में से 450 वन साइड यू आर एनी स्पार्क means something for which you will be remembered as soon as you leave the room तो समथिंग एक्स्ट्रा व्हाट यू ब्रॉट क्योंकि मैं बता रहा हूँ जो ग्लोबल ज्ञान वाले आंसर है ना और गोली ज्ञान वाले आंसर ने आता नहीं बना दिया वो हर किसी ने देना ऐसा स्पेसिफिक विद नेम जैसे आपने दिया वो स्टेट का 6 है हाँ बोलो बच्चे Indira Jaising. She Very good. is the activist for women's rights, and she was a very famous lawyer in the case Vishaka versus the state of Rajasthan, in which women were Very good. Very good. harassed in the give workplaces. her a round of applause. Very good. केस भी बता दिया ये तो पढ़िया सी यार इंटरनेशनल ये क्लास का है कि वैसे ये हमने कहीं पहले पढ़ा था शाबाश तो गुड करो करो था कैरी ऑन फोन। वेरी गुड शाबाश विशाखा versus the state of Rajasthan. वेरी गुड क्या था केस इसमें या in this the women were harassed at the workplaces, and the Supreme Court gave the judgment that they will be protected under the. Sorry, I have to study about it. wow very near you Women rights. Women rights, human rights. वेरी gender गुड rights. एक्सीलेंट शाबाश गॉड ब्लेस यू कभी बड़े लॉयर बनोगे मेरे को शांति हुई वेरी गुड शाबाश वेरी गुड आप लोगों के लिए लर्निंग है जिस तरह का लॉयर है हरीश साल्वे इज वन ऑफ द ये कॉर्पोरेट लॉयर कॉर्पोरेट लॉ का टैक्सेशन के कई होंगे हरीश साल्वे के एक दो केसेस उसने जीते हैं अगेंस्ट गवर्नमेंट टैक्सेशन के एक पी चिदम्बरम का केस था शायद यहाँ कपिल सिब्बल का था जो कह रहा था अच्छा केस था उसने अच्छा जीता था रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के अगेंस्ट था वोडाफोन के ऊपर लगाया था गवर्नमेंट ने सो ही फॉट दैट वाज आई थिंक if I am remembering correctly, it was Kapil Sibal only. That was his one of the well fought, well won, good case. रिट्रोस्पेक्टिव जाके आप पीछे जाके किसी के ऊपर नहीं लगा सकते थे टैक्स उसके लिए गवर्नमेंट इसने कंटेस्ट किया था फिर सुप्रीम कोर्ट कि गवर्नमेंट रॉन्ग है यहाँ पे उसने प्रोटेक्ट किया था बचाया कोई डील थी कुछ ऐसी कहानी थी एक रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स का पढ़ लेना केस लैंड केस है वो सुप्रीम कोर्ट का स्पेशली जिन्होंने बिजनेस या ये कॉर्पोरेट लॉ में जाना Who is Chief Minister of Punjab? Bhagwant Mann. Home Minister? Amit Shah. Punjab. अच्छा Punjab. सॉरी कोई नहीं होम मिनिस्टर ऑफ पंजाब ऐसा कुछ ओपन बोले तो पूछ लेना अच्छा वो मे बी इसीलिए आया ये चीज अगर कोई ऐसे ओपन पूछे तो आप पूछ लो अगर माइंड में दैट विल कोई ना दैट विल शो योर स्मार्टनेस सो होम मिनिस्टर ऑफ पंजाब it is the chief minister of Punjab is keeping the home ministry with himself. Okay, so Many chief ministers they keep it. जैसे ये महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर ने भी रखा हुआ है अपने पास एक बार सारे नाम पढ़ लेंगे फडनवीस देवेंद्र फडनवीस ओके पंजाब और इधर की जजमेंट को वहाँ बैठे हुए नहीं पूछेंगे ज्यादा any business news you have followed or any news you have followed in recent few days? Well, I've followed the news of into movies, which was the release of Border 2 movie, and it has become a very blockbuster as it has came and taken the nostalgia of the Border movie that came in the earlier times, and it also
brought a good ending to the movie. That all the nostalgia, the first border movie, all came together in the last ending scenes, and it also inspired many of the army families, and it became an emotion back for them. Mm. Which was the other movie which has done great on the block on this box office? Dhurandhar? सर एक हक मूवी बहुत इम्पोर्टेंट है. Yeah. हाँ हाँ. Shaban. Have Recently you on seen? हाँ, Netflix. वही शाहबानू का केस जिसने लड़ा था ना उसका भी पढ़ के रखो. Shaban. The one lady who kept Yeah. on She supporting. was. So शाहबानू केस अच्छा था. Really She was good. Jan, I think. I'm not. मतलब मूवी में तो जैन दिखाई थी. बहुत बड़ी लैंडमार्क है. हाँ शाहबानू केस वेरी वेरी बिग वन. तो इसको मेरे दिमाग में जब आप ये बोल रहे थे आया था ये गुड इट हैज कम आउट. तो जस्ट मेक एन एनालिसिस. देखिए ये पिक्चर हक मैंने देखी नहीं है, देख ही लो. इसलिए मैंने अभी बोला थोड़ा देख लेना. इट्स गुड. उससे अच्छा है उसका केस का समरी देख लेना और फिर देख लेना मूवी. फिर और अच्छी लगेगी. Any case India contested recently in International Court of Justice, and who represented that case? No, I don't have any idea. Girish Salwe represented. One of the case was related to Kulbhushan Yadav. I don't have any idea. Pakistan is keeping him in custody. He was an ex-Navy officer of India, Okay. and he was abducted from border of Iran on Pakistan, and Pakistan said that he was coming there for spying, doing terrorist planning, bombing planning, etc. India's argument is if we have to do such things, why will we send a retired Navy officer for this, whose clear link will be established with India and our defense sector? Those kind of arguments were there. For all good है. शाबाश. What are your strengths? वो तो आपने बताया ये critical thinking, analytical strengths, debating. कुछ ऐसी जो law से related. Critical thinker. Then weakness. Well, my weakness is that. Sometimes बोलना है जब भी weakness को बोलना है. Oh yeah. Sometimes I do this and साथ में अपने आप ही बोलना है. वो पूछे ना पूछे. What have you tried to? What have you done to improve? Sometimes I get hyper active, and that sometimes lead to Temporarily, momentarily, ये सब डाल देना. Sometimes आ गया और momentarily. Sometimes I get overexcited. over But I am trying to improve it through meditation. meditation. Yeah. करते हो? Very good. So 10-15 minute meditation in a day, and then when I'm good part is I am able to detect it as soon as it comes, and now through that detection I start taking little deep breaths for 10 times. I count out to 10, then reverse counting. All these strategies I have applied to reduce. They are helping me. ठीक है. So शाबाश, good, all the best. बाकी जो कॉलेज के बारे में पढ़ना है, पुरानी वीडियो सुननी है, सुन लेना. ठीक है. आपका कोई क्वेश्चन? कौन सा आपको इंटरेस्ट करता है सब्जेक्ट? लॉ. कौन से लॉ में जाना चाहते I want to get into criminal law. हो? Oh, why? It is considered to be very tough for girls. So why you I'll are study choosing? on it, no? Then I'll answer. So then if you really have interest in criminal law, Yeah. What then is you. an anticipatory bail? And where it can be filed? अरे नहीं, पढ़ने पे. नहीं, अच्छा क्वेश्चन है. This is Study the अरे most बेसिक है. question. थोड़ा ऐसे ना सोचोगे मैं मुझे पढ़ा नहीं तो मेरी तैयारी नहीं. एंटीसिपेटरी बेल वर्ड से सोचो क्या है. getting bail on Before your arrest जब warrants are arrest issued. warrant से पहले जो होता है, Arre- उससे पहले वो हाँ. बेल की मतलब पहले ही बोल देते हैं कि हम बेल के ये Anticipatory bail, anticipating that पता I लग may जाता be. है कि हाँ, मतलब बेल arrest हो गई, warrants हम may be. अरेस्ट नहीं हो रहे हैं. मतलब assuming मतलब अगर वारंट भी होता है तो अरेस्ट नहीं होते, मतलब वो बेल पे भी जाते हैं. एंटीसिपेटरी. हाँ चलो. Where can it be filed? जरा पढ़ने पे. कोई नहीं. Yes. नहीं ठीक है. क्रिमिनल और एक लेडी क्रिमिनल लॉयर टॉप की 4-5 लेडी क्रिमिनल लॉयर. तो अगर ये कभी बाई चांस पूछ लेगा ना कि लेडीज के लिए टफ होता है, कैन सर इफ इट इज लाइक दैट then I think I see the other side of it, that it is an opportunity. Number one. Number two, cases against women are on rise.
and many women feel uncomfortable with male lawyers representing them. So it is an opportunity for positive, 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 positive. Or anticipatory bail can be filed in district session court, high court, and supreme court. Thank you so much. कार्तिक जरूरत नहीं है आपको, वैसे आपका बढ़िया हुआ है, होएगा ही अच्छा। आपका बच्चे एंड में देख लेते हैं। हाँ जी, आपका नाम क्या है? ईश्वी। ओके, ईश्वी। कब है बच्चे इंटरव्यू? और कौन से कॉलेज के लिए? एसएमएस हैदराबाद। स्टडी किया कुछ कॉलेज का कि नहीं? तो जनरल इंटरव्यू कर देता हूँ। ड्रिलिंग जो जो कहा हुआ है पढ़ना है कॉलेज के बारे में, आज ही जाके पढ़ना। 8 घंटे सोना है, 3-4 घंटे रिलैक्स करना है, 12 योर फोकस शुड बी नाउ लाइक दिस। फर्स्ट तक कब तक है? फर्स्ट तक, उसके बाद फिर रिलैक्स हो जाना, उसके बाद +2 पे फोकस कर लेना। इम्पोर्टेंट है। अच्छे कॉलेज में चले गए, अच्छी चीज पढ़ोगे, अच्छे बच्चों के साथ बैठोगे। पानी पीना है? ले लो। नहीं लेना, आपको ले लो, ले कोई मंगा भी लो। Ishwi, what is the meaning of Ishwi? Sometimes it can start, the intro can start like this, depends on their mood. It's a unique name. ईश्वर को मानना। So are you a Ishwi person? Yeah. उनको कहना, हाँ इशारा कर दिया, हाँ you believe in God. Yes. You have watched the movie in which the act of God was the center point. What is which are the things which come under act of law, act of God? नहीं पता। There are some things like earthquakes, it's uncontrollable for humans. So those kind of things. Insurance laws are under governed. Insurance laws or insurance sector is governed by whom? नहीं पता। इंश्योरेंस IRDA का नाम नहीं सुना कभी? जीके में आया होगा, नहीं आया? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट एजेंसी और समथिंग लाइक IRDA। रेगुलेटरी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी, देखना एक बार फुल फॉर्म। एंड हु कंट्रोल्स द स्टॉक मार्केट्स? नहीं पता। सेबी। सेबी का भी एक एक्ट है, क्या है? अथॉरिटी। तो दिस इज IRDA एंड सेबी। सेबी का एक एक्ट है प्रॉपर। IRDA का भी एक्ट होगा मुझे लगता है। RBI सुना है नाम? व्हाट डज RBI डू? Money. Is a regulatory body for banks. बैंक्स। आपका क्या है? कॉमर्स नहीं है, आर्ट्स है? Are you aware about the powers of President of India? थोड़ा बहुत कर लेना। मेरी जो मैं करा रहा हूँ ये मॉक्स, इनमें गोल मेरा अपनी तरफ से ये है कि 300% प्रेपरेशन। आज आपको लग सकता है कि वो 200 वेस्ट करा दिया सर ने मेरे से, तो उसके बारे में कोई पूछा ही नहीं। यहाँ अगर सिर्फ 50 पूछा कोई, तो कहोगे 250 सर ने वेस्ट ही करा दिया सब कुछ। वो आज नहीं यूज होगा, कॉलेज में जाके बात करोगे तब यूज होगा। जब किसी बड़े प्रोफेसर के सामने आप ये एग्जांपल देके बोलोगे ना, क्रिमिनल लॉ में ये मैडम ने ये किया, ये किया, ये किया, एक बार इंप्रेशन बन गया, 5 साल कॉलेज में रहेगा, क्लास पे भी रहेगा, प्रोफेसर पे भी रहेगा, ये बंदे में दम है। और एक बार जो बन गया इंप्रेशन, पहले 10, 15, 20 दिन में, वो फिर पूरे 5 साल टर्म इट कैरीज विद। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट। तो जो नहीं भी सीखा, जो आप पढ़ोगे वो नहीं यूज होगा इंटरव्यू में, बट वो क्लासरूम में यूज होगा, कोर्ट रूम में यूज होगा। कभी कभी कोई चीफ जस्टिस आया होगा, उसको आप कोई क्वेश्चन पूछोगे, वो कहेगा यार अच्छी थी, ने मुझे पूछा था ऐसे कि हाउ टू अकाउंटेबिलिटी ऑफ जजेस। कोई ऐसा क्वेश्चन चीफ जस्टिस आए एंड में कहे एनी क्वेश्चन यू हैव, तो आप पूछो सर विद ड्यू रिस्पेक्ट आई जस्ट वांट टू नो व्हाई देयर इज नो
judicial accountability bill, and why there is no government official accountability bill, and why there is no punishments defined in that bill, so that people, police officers who don't give you right evidence, the agencies which don't provide you the right evidence or try to tamper with the evidence, why there are no criminal proceedings. अब तब तक आप लॉ पढ़ चुके हो, why the criminal proceedings are not provisioned in the law against them, because of which there should be deterrence for them not to play with the law. अभी जब कोई आईजी डीआईजी पकड़ा जाता है किसी केस को टोटली गेम प्ले करते हुए रिश्वत लेते हुए, he does not need to be suspended, he needs to be sacked. No, not only he needs to be sacked first, and he needs to be prosecuted, and his punishment should be 2 times the normal punishment, because he's sitting in the position of power and he's acting against what he's supposed to act, and by that he's derailing the total justice system of the country. और ये जब तक नहीं आएगा ना लॉ में, तो पुलिस को कोई डर नहीं. नो रिवार्ड फॉर गुड वर्क, नो पनिशमेंट फॉर बैड वर्क. जस्ट एक लाइन लिख देते हैं जजमेंट्स में, वी एडवाइज द पुलिस डिपार्टमेंट टू टेक एडिक्वेट एक्शन against this officer who has tried to tamper with the evidence. Now, whether that action was taken, what action was taken, was it prosecutable or not, is he prosecuted or not, or he is just suspended for 2 weeks or 2 months. Under suspension, he gets 50% salary for not working. He enjoys holiday with his family. Then he comes back, rejoins the duty, and he's again continuing with the bad practice. This is where the root cause is. तो जब तक उनको डर नहीं होगा, प्रॉब्लम वहीं की वहीं चलती है. Sir, if we are asked about the lacking of the collegium system, अगर by chance हम पूछ ले, तो लैकिंग आपके लेवल पे ज्यादा पूछेगा नहीं, मुझे लगता है. पूछेगा तो यही आ सकता है कॉलेजियम में इंटरनल मैकेनिज्म through which the collegium recommends needs to improve. ये बोल देना. I don't have any problem with the collegium system, but through the same system, many inefficient judges, many non-quality justice-giving judges get promoted. Lacks transparency. One is transparency. Secondly, systems in like Criterion. criteria. right. We will discuss in the previous classes. There needs to be something like minimum 70% the judgments a judge gives should have quality and should stay and should not be turned down by the next court. Minimum. For a judge to remain in chair, for a judge to get promoted, it should be 85% plus. And for a judge to be sacked, should be above 50% or below 50%. He should be sacked. And for means big deviation like that, High Court judge who has given that Unnao case guy bail against a very not very influential weak plaintiff. What will be done against him? Nothing. That kind of guy should be sacked. Inquiry should be initiated, sacked, prosecuted. You can't play. At present, there is a big play happening with the judicial system. People who don't get and who don't deserve bails, they are given bails within 1 month. And people who deserve bail, they have to go to High Court and they get bail after 2 years. The lower courts की बात कर रहा हूँ, ADJs. ADJs, the lower below the additional divisional judge. He at that end, if somebody the case is not very strong enough, and it seems to be the case where the person may not be the guilty, and he is not seeming to be a harmful person, and based on the merits of these kind of merits of the case, he deserves to be given a bail, but he has to first from ADJ he has to go to senior ADJ, appeal against rejection of bail, then session judge, then High Court gives him bail. So what are these three officers done below him? They were not given bribe. That's why he was not given bail for 2 years.
And then cases where, again, there are some, जैसे कोई बात करे तो पूछे how to improve judicial system of India, तो आपको there can be some procedural corrections which are needed, like a case should remain with the same judge until unless there is something very big wrong he is doing, till the time that judge is in the same court. It should not be that after every 2 3 months the cases are changed from one judge to another. Very big procedural lapse. Number one. Number two, procedural की बात करते हैं. Again, these kind of things, accountability, quality of justice, how much he is delivering right justices, etc. Whether there is how many cases of his are getting rejected from the next court, etc., etc. Number three, clear code of conduct and punishment charter for people who try to play with evidence, etc., or inquiry, etc. Then ये तो हो गया. फिर आगे उस पे ये हो गया. वन इज प्रोसीजरल, सेकंड इज रिक्रूटमेंट एटसेट्रा. इसमें 33,000 जजेस की पोस्ट आर वेकेंट. फिल देम इमीडिएटली. Then more system related cases which are not very big in impact, say less than 1 lakh value, they need to be all referred to local adalats and settled quickly, fast. Only on appeal they should come to the court. If the local adalat decides something and the person still doesn't agree with it, then only it should come to the next. As a appeal against that judgment, it should come to the court, and it should be compassionately done so that many things get settled. Impact is not very big. Government के खिलाफ केस है, मतलब on the merit plus compassion, both should be applied. तो ये 3 4 चीजें मैक्रो लेवल पे. जजेस की पोस्ट कर दो. छोटे छोटे केसेस हैं, करोड़ों केसेस, मे बी अराउंड 50% केसेस में भी दिस कैटेगरी, इनको कर दो. और जजमेंट जितनी फास्ट होंगी उतना ही डेटरेंस भी होगा क्राइम करने के लिए, तो आगे केसेस कम हो जाएंगे. और थर्ड, प्यूनिटिव एंगल एंड चार्टर. अब जैसे मैं इंश्योरेंस कंपनी के लिए बार बार लिखा है, IRDA वगैरह, दोज इंश्योरेंस कंपनीज विच आर नॉट गिविंग जेन्युइन हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम्स, you go to their GRO, ग्रुप redress, still they don't agree. और एंड में बड़ा ब्लेटेंटली लिख देते हैं आप एम्बर्समेंट में चले जाओ. इंश्योरेंस एम्बर्समेंट आप इंश्योरेंस एम्बर्समेंट जाते हो चंडीगढ़, वो कहता है मेरे पास 2 साल के केसेस हैं, 2 years पेंडेंसी. तो आपको जो 40,000 के करीब जो केस है आपका, 2 years के बाद शायद डेट दे पाएंगे, बिकॉज इट इज ए नाउ एक चीटिंग काइंड ऑफ ए गेम हैपनिंग. तो उनके पास चार्टर होना चाहिए जो जेन्युइन क्लेम, 40,000 का मेरा मान लो एक हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम नहीं दिया किसी बड़ी कंपनी ने, वो लेटर ऑन 2 साल के बाद वो 40 नहीं देंगे, उसका क्लियर होना चाहिए, 5 times देना पड़ेगा. प्यूनिटिव एंगल टू इट. अब ऐसे ही गवर्नमेंट की सेटलमेंट्स हैं. गवर्नमेंट ने किसी का एरियर नहीं दिया, किसी की पेंशन नहीं दी, किसी का ड्यू HRA नहीं दिया, एटसेट्रा एटसेट्रा, उसके लिए केस करने गया कि मेरा बनता था पेंशन का ये अमाउंट, दिया नहीं गवर्नमेंट, आई एम फाइटिंग अगेंस्ट गवर्नमेंट. इट गेट्स डिसाइडेड 7 years लेटर ऑन. तो नॉर्मली कोर्ट्स क्या करते हैं, 7 years का इंटरेस्ट दो. इट शुड नॉट बी इंटरेस्ट, इट शुड बी मेनी टाइम्स. Then people will start improving. Then the insurance companies will stop playing. Otherwise, game will continue to play because they know एम्बर्समेंट के बाद लंबे केसेस है. एम्बर्समेंट के बाद कंज्यूमर कोर्ट जाएगा बंदा. मैं 25 30 हजार का लॉयर करूंगा फॉर ए 40,000 क्लेम. एम्बर्समेंट इज नॉट कॉस्टली, इट इज फ्री. तो इट शुड, उसको पता है ये ओवरबर्डन है, तो मेरे जैसा बंदा जाएगा ही नहीं कोर्ट में. तो उसको लगता है इंश्योरेंस वाले को मेरा तो 40 बच गया. और अगर मेरे को पता है कि चार्टर में लिखा है कि अगर मेरा केस में जीत गया तो मुझे 2 लाख मिलेगा, आई विल स्पेंड 25 एंड ही विल बी इन फियर कि मैं दे दूं यार, 40 दे दो, बाद में 2 ना देना पड़े. उनको पता है एम्बर्समेंट में क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा बोलेगा इंटरेस्ट के साथ दे दो, ये 2 साल का इंटरेस्ट, तो कुछ भी नहीं है, क्या है 10%, 4,000 रुपया और दे दिया, बच जाता तो बच जाता. आउट ऑफ 1 lakh people whose claims get denied or are partially paid, maybe one will reach embarrassment.
and out of 100 who will reach ombudsman, one may go to consumer court. तो सोचेगा यार ombudsman में तेरा चढ़ छोड़, कौन जाके फिर 25,000 को कंज्यूमर लॉयर लेगा, 25,000 मिनिमम. तो people give up. So system processes, procedures, system related, charters, etc. So Ishvi, you look very soft for a law profession. Law needs very tough, very strong. You have to deal with criminals whole day in the court. Have you been to any court so far? जाया हुआ एक दिन. पापा लॉयर तो नहीं है, उनके पापा लॉयर हैं, इनके साथ टाइम फिक्स करके सारे जाने एक दिन किसी राउंड मारो किसी कोर्ट रूम में, बैठो एज ए पीछे एज ए स्टूडेंट, कोई नहीं मना करेगा. जज खड़े होना, खड़े हो, 2 केस प्रोसीडिंग देख के आओ, कैसे आवाज लगती है बाहर, कैसे लोग खड़े हैं, लाइट्स नहीं है, या कोर्ट रूम है टूटा फूटा है, तो आपको पता चलेगा इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या प्रॉब्लम है. डिस्प्ले कहीं नहीं हो रहा, मेरा केस किस रूम में है क्या नहीं. हाई कोर्ट में है ये सब चीजें, डिस्प्ले हो रहा है किस कोर्ट रूम में कितना क्या, कौन सी सीक्वेंस में है, अर्जेंट है नहीं है. यहाँ कुछ नहीं, यहाँ आवाज पड़ती है बस, हाँ जी आओ जी, नहीं आए फाइल, फिर आ गए, फिर 2 बंदे खड़े हैं. आप देखना 50% मेरा जो तजुर्बा कहता नहीं, डेट सर आज वो ना, सर वो ये नहीं है जी, सर वो आज उधर कोर्ट में गए, हाई कोर्ट गए हैं, सर डेट दे दीजिए नेक्स्ट. हाँ ठीक है सर डेट. यू विल ऑब्जर्व व्हाट इज हैपनिंग एज फ्यूचर लॉ स्टूडेंट. तो नहीं गया हुआ कोर्ट जरूर जाओ, जैसा टाइप करो, कर सकते हो, इनको हेल्प करो, तो छोटा सा ग्रुप बना लो, ठीक है. नहीं है तो आपस अभी बाहर जाके पापा से बात कर लेना, कल कोर्ट चलता है, 1 घंटे के लिए सब लोग फिक्स करके एक जगह पे मिलो, जाओ देखो क्या है. यू अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया तो यू विल बी एबल टू से सर आई मे लुक सॉफ्ट टू यू फ्रॉम आउटसाइड बट फ्रॉम इनसाइड आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग. ये आंसर बनता है इसका, ठीक है. हो ना स्ट्रॉन्ग. हु इज योर रोल मॉडल, किसी से भी पूछा जा सकता है. रोल मॉडल नहीं है, बनाओ किसी को, जैसे वो जजमेंट जिसने केस लड़ा था उसका, उसको बना लो रोल मॉडल. ऐसे फैमिली मेंबर बोल सकते हैं, 80% चांस है वो खुद बोल सकते हैं. वो 80% चांस इस पे ये बोलते हैं टेल अस समवन विद हुम वी कैन रिलेट. जैसे वो हो गया, आप महात्मा गांधी बना लो, इजी है. एलएलबी, महात्मा गांधी लॉयर, क्यों? लेकिन फिर वो आइडियोलॉजी के सवाल करने लगे. कुछ नहीं ज्यादा करना, उनको पता है, उनको दोनों साइड पता है, बट दे विल ट्राई टू एट योर लेवल, दे विल ट्राई टू चेक कि भाई ठीक है क्यों महात्मा गांधी जी क्यों, बताओ, पता है कोई क्वालिटी पता है उनकी, ये भी नहीं पता. शांति, वन इज लॉ. सबसे बड़ी चीज थी उनकी उनकी बताओ पहले आप बताओ, पता है कुछ महात्मा गांधी जी क्वालिटीज बिकॉज ऑफ विच इज योर रोल मॉडल. ओके, वन इज नॉन वेल. अब एज ए लॉयर सबसे इम्पोर्टेंट, ही ऑलवेज, जो रेसिज्म वाला केस, वो भी दूर की बात है ना. लॉयर के पॉइंट ऑफ से 1 रुपए का पॉइंट क्या बनेगा वो बताना है. नॉन वायलेंस बनता है, वायलेंस करने वाला लॉयर नहीं चाहिए किसी को भी, और वायलेंस के अगेंस्ट लड़ने वाला बंदा चाहिए लॉयर के लिए. तो वायलेंस वाला बनता है आपको केस. बोलते टाइम ये ध्यान रखना है कि हमें क्या चीज, उनको हमारा क्या चीज जो हम बोलेंगे वो पसंद आएगी. लीडर भी हमने पॉलिटिकल लीडर नहीं बनना. क्रिटिकल थिंकिंग इज वन. ही ऑलवेज tried to fight within and within the gambit of law. तभी वो अंग्रेज जो थे वो दुखी थे गांधी जी से ज्यादा, कि ये लॉ के अंदर रहते हुए उनको तंग करते थे. कभी एक बार किया नमक के लिए, हाँ वो वाला वो भी एक सिंबॉलिक किया, पीसफुली किया. तो वट एवर ही यूज टू फाइट, he always tried to fight within the framework of law. This was his biggest strength, and this is why in fact both of these were his biggest strength. Non-violence. वो थे पर लॉयर बड़े बड़े होके गोलियां भी चलाएंगे. लॉयर बड़ा कुछ उल्टी उल्टी भी कर लेते हैं. तो बट his two strengths, non-violence ethic and being
trying to do everything within the framework of law. नंबर टू, नंबर थ्री, वो बाकी चीजें जो है ना वो कंट्री के लिए अच्छी थी, कंपैशनेट, ऑल रिलीजन्स को लेके चलना, सेल्फ को सेक्रीफाइसिंग एक्सेट्रा, सेल्फलेस, मतलब एग्जांपल ये ले लो, यूज टू सेट एग्जांपल and lead by used to lead by example. पेशेंस भी है, परजर्वेंस भी थी, परजर्वेंस, पेशेंस एंड बिलीफ, दैट सबसे इम्पोर्टेंट मुझे उनका ये अच्छा लगता है, बिलीव दैट गुड एग्जिस्ट इन एवरीवन. दिस आई यूजुअली यूज टू लाइक. He always used to say कि अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है, give him flowers, try to invoke the good in him, and because of that he will feel guilty. That God element within every human, he will make him or her feel guilty. What atrocities I am doing on this poor guy, and it happened, and it led to change of mind, heart of many judges, many top leaders, the rulers of India, etc. वो तो एक अलग बात है, मतलब in Britishers, lot of Britishers and worldwide people were highly impressed by his this conviction that there is good, strong belief that good exists in everyone, and he has to just invoke. So that is what, that was his premise, because of which he used to say कि अगर वो एक मारता है तो दूसरा का लगेगा. After 4-5 slaps he will feel bad. Ultimately human अंदर ना कहीं तो होता ही है human, and then he feels guilty. This was his premise, how he worked. How to use to set example. एक क्लोथ लेके रहना है, मेरे एवरेज इंडियन के पास कुछ नहीं है तो मैं क्यों ऐसे कोट कोट पहन के घूमूं. वो देखो बेचारे लोग कैसे रह रहे हैं एक क्लोथ में, तो आई विल आल्सो स्टे टिल माय एवरी इंडियन गेट्स इट. दीज आर, सो ही ठंड में भी रहे, गर्मी में भी रहे, इन वन क्लॉथ, कॉटन का. दीज वर हिज यूज्ड टू सेट एग्जांपल एंड यूज्ड टू लीड बाय एग्जांपल. पेन, एम्पैथी. ओके, रोल मॉडल इसलिए महात्मा गांधी जी को बना सकते, गुड है फॉर लॉयर. व्हाई यू शुड बी सिलेक्टेड, इसका तो आंसर तो अच्छे से अभी मैं सब कुछ बता के हटाऊं. Yes, I think everyone in the society should. नहीं पीछे जाके अद्दा नहीं पहने प्रिंसेस प्रिंसेस ऑफ वेल्स. नो, यू आर हियर टू गेट इंटरव्यू सिलेक्शन. Yes, I think everyone in the society should experience free ओनली trial. हियर दिस मच लोअर बैक शुड टच स्ट्रेट. हाँ, गड़बड़ हो जाएगी. हाँ, और बिल्कुल लोअर बैक इतना, हाँ बस स्ट्रेट रहना है. हाँ बोलो बच्चे. As I think everyone in the society should experience free trial and proper representation. And I want to learn. I want to be a good lawyer because I'm doing. इससे क्या, आपको क्यों सिलेक्ट कर लूं? I have interest in law. I have strong interest. पहली चीज ये कर दो. I have strong interest in law. field. अब आप बताओ अपनी इंट्रोडक्शन. देखते हैं इंट्रोडक्शन में क्या क्या बोलते हैं. My name is Ishu Bansal. I study at DUV PRS Middle School. I want to do a law because it helps me to develop power. It helps me to create a power change, and I want to be in Symbiosis, Hyderabad. My mother is a housewife and my father is a businessman, and my brother is doing MBA from Narsimji. Um, I want to do a criminal lawyer because I think everybody in a society should experience free trial and proper representation. And it builds my critical thinking and helps in maintaining and helps to maintain the difference in society. Have you participated in any MUN or any debate competitions? Yeah, or any? Debate. So debate, mention it here. अगर इधर भी पूछता है व्हाई शुड बी सिलेक्ट, तभी मैं उधर लेके गया. इंट्रोडक्शन में आता है कुछ, वो भी अंदर है रखा, बाहर नहीं निकालना है. So we should tell, I am doing +2
with arts, and I want to be a lawyer. ये story मोटा मोटी ठीक है. I have participated in various debate competitions. Debate competitions. कोई प्राइज मिला था कभी? Yes. कोई बात. So debate competitions, and and hence and hence I think my ability to analyze things and debate about them has improved. कोई पूछ पूछ सकता है आपसे टॉपिक बताओ कोई डिबेट का जिस पे डिबेट किया था, फिर वो आपका उस पर पूछ सकता है कि क्या था आपका व्यू, क्या टॉपिक्स थे फॉर प्रो, कोई उस टॉपिक पे क्या प्रोस थे पॉइंट्स, क्या कॉन्स थे, ये याद कर लो. एक ऐसा ना हो कि उसको ये लगे कि झूठ बोल रहे हो कि गए थे. He can go into it. He can, if you say that I have participated in various debate competitions, he can tell us any topic on which you debated. What were your pro points? What were con points? याद कर लेना, गए तो थे ही, कोई ना कोई एक का सुन लेना सारे क्वेश्चन. What are your views about US US capturing the president of Venezuela? पता है हुआ था कि नहीं? Yeah. व्यूज कुछ तो होंगे. लॉयर बनना है. बेसिक चीज है बच्चे. इंटरनेशनल लॉ डजंट अलाउ एनी वन कंट्रीज पर्सन्स army Superpower. to enter the other country, kill some of its soldiers, kidnap the president of their country, and then say that we will try him in our country. If you wanted, if you knew, if you had strong evidence about that president, USA should have gone to International Court of Justice, produce all the evidences, should have proven that this guy is the one who is kingpin or who is directly involved in smuggling, production of drugs, transportation of drugs for which he was accused of by USA. So once they had proven it, then something still they could have thought कि करना है कुछ भी नहीं. But the way it has been done, it is clear infringement and breaking of the international laws. If America had problems with Venezuela president, it should have approached the International Court of Justice and should have tried to get him tried over there. This is the way the world should work. What he has done is going to has serious implications on the world order. New world order is being set. New world order is being set. Now, any country which has capability, surveillance, or can kidnap anyone, any country's leader, and then do whatever they want in his court, because that country is not ready to fight with you militarily. Why UN's are UN laws applicable to the enforceable or not? नहीं पता इसका, थोड़ा पढ़ लेना. आपका क्या व्यू है इस पे? No. Yes. Sir, UN laws. Recommendatory है. Recommendation advisory है, but not enforceable Because they don't have their legal binding. enforcing So they are not enforcing enforceable. agency नहीं है. They are advising, recommending in nature. Guideline. Consensus based. This Ukraine-Russia conflict is now stuck on one important point, because of which the peace deal is not taking place. Are you aware about it? ਕਿਦਾਂ ਲੈ ਲਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਮਾਰਾਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ. 10 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਤਰਫ ਮਰ ਗਏ, 8 ਲੱਖ ਇੱਕ ਤਰਫ ਮਰ ਗਏ, 18 लाख ह्यूमंस हमारे जैसे vanished from this earth. Devastation of billions of dollars, both sides. हमें कुछ लेना देना नहीं. किसी को आपको पता है कहाँ हिंज कर रही है प्रॉब्लम? सर एक
टेरिटरी की वो है एनेक्सेशन जो यूक्रेन में है, एंड रशिया वांट्स की वो मैं लेना वो चाहता मैं हूँ, लेना दैट इज डॉनबास. So that is a main point of conflict now. Russia has acquired around 20% land of Ukraine, and Russia says other points all agreed. We want Ukraine should withdraw from Donbass, which is again from Ukraine's point of view very absurd. From Russia's point of view, Russia says I have acquired 20% of Ukraine, so at least it should not look to my public that I waged a war, and now after getting 10 lakh people killed, after losing so much money in forfeiting and in assets destruction, etc. I come out with a negotiation which where I'm not winning anything. So this is the point of contention. थोड़ा सा ज्ञान बढ़ा लो, न्यूज़पेपर पढ़ लो, और एसएलएस की और इंटरव्यूज दे लो. आपके फ्रेंड्स हैं, एक आप दोनों फ्रेंड्स हो, एक मॉक इंटरव्यू आपस में टाई अप करके कर लो, उनकी कर दे. टाइम लेके घर में करनी है, फोन पे करनी है, यहाँ आके करनी है, बैठ के करो. यू रिक्वायर वन मोर मॉक. उसका बहुत अच्छा था, कार्तिक इट डजंट नीड मोर. ठीक है, थोड़ा सा जागो, न्यूज़ पढ़ लो, पुरानी वो पढ़ लो. आज जितनी डिस्कशन हुई है इसको वीडियो को दोबारा सुन लेना, बुलेट पॉइंट्स बना लेना, कॉलेज का डिटेल पढ़ लो. एसएलएस हैदराबाद, वाई एसएलएस हैदराबाद, वाई यू शुड बी सिलेक्टेड. बिलीफ होना चाहिए. आज के दिन 20% है, कर लो उसको, 20 से 300 पे ले जाना है बिलीफ. ओके, कोई डाउट? चलो शाबाश, गॉड ब्लेस. हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, इट कैन हैपन. यू आर 50% देयर, तो बाकी 50% उसके लिए कुछ कुछ पढ़ लेना. जो आज इनके सबके पॉइंट्स हुए हैं डिस्कस, आपको बताओ, जो आप इंटरव्यू का पूरा बता दो कैसे. बेसिकली सीवी के रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं तुम्हारे कि आपने को करिकुलर एक्टिविटीज की हाँ. उसमें एक्सपीरियंस क्या था, आपने पार्टिसिपेट क्यों किया था, उसमें आपकी क्या क्वालिटीज में हेल्प किया, क्या इम्प्रूवमेंट हुई. माइनस पॉइंट्स थे आपकी जो क्वालिटीज में इसने रोल प्ले किया. फिर थोड़े जनरल क्वेश्चन आ जाते हैं कि वाई लॉ, अगर लॉ नहीं करोगे तो क्या करोगे. सेम क्वेश्चन अभी तक, ये जो सब कुछ हमारी बात हुई. आगे चल. लीगल बेसिस में वो जैसे कॉन्ट्रैक्ट में पूछा था कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट में बोला था, तो प्रीएम्बल क्वेश्चन आया था मेरे को आज. सर सॉरी टू इंटरप्ट, अगर मैंने लाइक मैं से क्वेश्चन आपने पूछा नहीं तो मुझे इसका आंसर ये भी पूछा था. लाइक मैं अगर मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो मैं ये आंसर दूंगी दैट आई वुड लाइक टू जॉइन माय फादर्स बिजनेस. तो क्या ये आंसर नहीं नहीं एप्रोप्रिएट नहीं है या नहीं फिर मैं वही नहीं नहीं, स्टिक वुड यू हैव आस्क्ड, तो आप कहो नहीं, लॉ इज द ओनली ऑप्शन. हाँ वही भी पूछ. So even if I don't get selected for integrated, I may do graduation, then I'll do 3 years law. I am very clear, law is a path for me. Business वाले दी कहानी नहीं खराब हो तभी मैंने जाएगी. क्वेश्चन पूछ लिया वो आपसे, नहीं वो क्लियर वो नहीं बोलना. टीचिंग वाला ठीक था, टीचिंग वाला हाँ, सर बट क्योंकि बट बेटर है लॉ चीज पे में रहो, अभी लॉ पे रहो, हाँ तो तभी लॉ मैंने पे पूछ रहो. ली. मेजर न्यूज और मेजर हेडलाइंस. वेरी गुड, बेटर बस रहने दे फिर. 10 मिनट्स होता है. वेरी वेरी एवरीथिंग टचवुड 99% पहले लिस्ट आएगा ना, सुनिए सुन लेना गुरु, जो पुरानी है और वीडियो इसी सर कार्तिक वाली वीडियो में ये मौजूद था कि हमने जो कार्तिक नहीं, दो है, एक सेकंड वो वाले नीचे नहीं है. सेकंड वाली है इसमें. स्टार्ट किसी से होती है, फिर सेकंड इनकी. चलो, कर दो राजा स्टॉप.